Hello everyone, I'm Optometrist Jamal Khan. A very enthusiastic welcome to each and every participants and affecting greeting of our respected speaker Murtuza Ebrahim sir. Here I'm going to share some tiny beautiful introduction and beautiful journey about Murtuza Ebrahim sir. He is PhD scholar at UKZN South Africa. He was completed his master degree from Sjsio Pammal, Chennai. He is also ex-PS professional service head offline business at lenscard.com, as well as productive consultant at Vision RX and Zeiss Vision India. He is also having 4-year exposure with retail optometrist in Titan Eye Plus and also clinical exposure, 4-year clinical exposure with Sankara Nethralaya. Currently, he is working with the senior manager in with the Rivoli Vision Academy. So, Murtuza sir, is I'm audible to you? Hi, good afternoon. Yeah. Good afternoon, sir. I'm handed over this call to you. And I Yeah. request to each and every participant kindly mute yourself for least disturbance so it will help you out to understand betterly. Thank you so much, sir. Hand over to you, sir. Thank you. Good afternoon. Before we start, in my regular style, I would want to just see how many people are active. If you can just use your chat message, send me a hi on the chat. There are about 47 participants. I'm seeing them live on the call, and it has also been recorded, maybe for the future reference. What I'm doing today is just like a quick introduction to the place where I am currently practicing. I am fluent in English, I am Hindi, Tamil. So generally, if there is any questions that are coming in this language, I'll be happy to answer. Initial request would be just allow me initial 15-20 minutes to just explain the topic that I have, and then maybe I would rather want it to be a more of a discussion and interaction session rather than me taking some session classes and just moving on. So अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं हिंदी में कुछ समझाऊं, please be very clear and I'll be able to do that. अगर आपको चाहिए कि particular language मैं साउथ से हूँ तो I can comprehend some questions as well. तो मैं वो भी कर सकता हूँ. Okay. The idea behind the whole journey is I'll just give you the background. इकरा से मेरी बात हुई थी and she was just saying that she wanted a session and हमें क्या करना चाहिए. And then I said basically I am in UAE, particularly Dubai. अभी currently मैं दुबई में practice कर रहा हूँ. And I thought that जितने भी इंडिया में हैं हमारे कलीग्स, उनके साथ मुझे मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करना है और कुछ अपडेट्स देनी है. कुछ few updates that I'm going to share with all of you. Maybe you are already aware of it. Few updates which I'm going to give, maybe it's new and first time. And ये सारी चीजें सुन के अगर कुछ questions crop हो रहे हैं तो आप मुझे definitely question कर सकते हो. What I have done is मैं आप लोगों को सिर्फ brief दे रहा हूँ. I'm just giving you the overall description. ऐसा नहीं है कि जो भी चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो deeply cover हुई है. It's all superficial, but the idea is to the maximum extent I just want to pass on the message. And मेरा email ID भी इकरा के पास है. आप लोग एक ग्रुप में हो. And just in case if you feel that future में अगर आपको connect करना है या कुछ भी पूछना है, you can feel free. You can always connect with me. ठीक है. Now to start with, I just got a hi from 11 people on the chat, and जो रिप्लाई कर चुके हैं वो हाई वापस ना भेजे, और बाकी लोग अगर सिर्फ एक हाई पोस्ट कर दे चैट में तो आई विल बी एटलीस्ट अवेयर कि कितने लोग मुझे सुन रहे हैं एक्टिवली, एंड देन आई विल स्टार्ट विद माय प्रेजेंटेशन. Yeah, so now the numbers are really going up. Thank you.
Very nice. So let me just allow to share my screen, and I'll just take you through the presentation. Fine. I just want to respond from any one of you. If you can just confirm if my screen is visible. Yes, visible. Thank you. Okay, so basically what we are going to discuss today is like optometry prospects in Middle East. अभी जब हम Middle East की बात करें तो Middle East is like a real big region. This covers up everything right from Saudi, Oman. Sorry for that. Saudi, Oman, UAE, and other countries. Basically, where I practice, Dubai. Dubai is a part of UAE, and when we talk about optometry prospects abroad, ठीक है, जैसे आप यूके ले लो, यूएस ले लो या ऑस्ट्रेलिया ले लो, पीएचडी आपको करनी है या फिर वहां पे प्रैक्टिस करने हैं, तो there are certain rules and regulations that you need to follow. So similarly, Middle East में भी वैसे ही rules and regulation है. But what I'm going to do is आप लोगों को just give a brief overview. I'm just sharing these 5 areas. अभी जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, it is mainly from the angle of what you should know, basically, at least basic level knowledge जो आपको पता होनी चाहिए if you are going to pursue your career here in the Middle East region. ठीक है, अगर आपको अब्रॉड यहाँ पे शिफ्ट होना है या फिर लाइक ऑप्टोमेट्री यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, देन व्हाट इज द डायनामिक ऑफ ऑप्टोमेट्री यहाँ पे. ठीक है, अनलाइक अगर हम इंडिया की बात करें तो देयर आर लाइक लॉट ऑफ एरियाज, लॉट ऑफ डिफरेंसेस, बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं. AHCP एक्ट आ रहा है, एंड ये जो एक्ट, ये जो बिल टेबल हुआ है उस पे बहुत सारी चीजें हो रही है. सिमिलरली यहाँ पे अगर देखा जाए तो देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड यूएई की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो इट इज ऑलरेडी वेल डिफाइंड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, so now let's get into optometry in Middle East. I'm just going to cover ये सिर्फ 5 areas है जो मैं कवर करने वाला हूँ. each पे मैंने एक स्लाइड्स बनाई है which can give you rather a clear clarity in terms of क्या होता है. ठीक है, as I said, it may not be extensive. हो सकता है कुछ areas है जो छूट गए होंगे, but if it crops as a question, please go ahead. आप मुझे सेशन के एंड में डेफिनेटली पूछ सकते हो. Right. So going ahead, optometry in Middle East, basically डायनेमिक्स क्या है यहाँ पे. बेसिकली अगर आप देखोगे तो अपॉर्चुनिटीज बेसिक यहाँ पे अगर हम लेने जाए तो ऑप्टोमेट्री मिडिल ईस्ट में या फिर यूएई में अगर हम बात करें तो they don't have a major optometry college. So the whole region is actually dependent on optometrists coming in from different parts of the world. ठीक है, तो वर्कफोर्स जो है, स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो कम है, राइट. और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग आते नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट कमिंग इन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू दिस पर्टिकुलर रीजन, एंड बिकॉज वी डोंट हैव यहाँ पे ऑप्टोमेट्री के कॉलेजेस ज्यादा नहीं है. जैसे आपने देखा मैंने 3 लिस्ट किए हुए हैं यहाँ पे. इसके अलावा बड़ी यूनिवर्सिटी से ऑप्टोमेट्री के कोई कोर्सेज नहीं है. वी हैव वन इन अम्मान, वन इन ओमान एंड वन इन सऊदी. सो टिपिकली अगर आप देखोगे तो दुबई, शारजाह, अबू धाबी जो मेन इकोनॉमी है, ड्राइविंग इकोनॉमी है, जहाँ पे बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है, वहाँ पे ऑप्टोमेट्रिक कोर्सेज नहीं है, राइट. सो दिस इज वन अपॉर्चुनिटी. ये हमारे लिए ओपन है जहाँ पे फुल टाइम ऑप्टोमेट्रिक कोर्स ना होने की वजह से ऑप्टोमेट्री एज अ सेक्शन बेटर है. अगर आप देखोगे सऊदी में, ओमान में, वहाँ पे ह्यूमनाइजेशन हो रहा है, तो मोस्टली ऑप्टोमेट्री सेक्टर या ऑप्टोमेट्री फील्ड जो है वहीं से ऑप्टोमेट्रिस्ट को लिया जाता है. सो अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू ओमान थोड़ा लेस है. लेकिन अगर आप दूसरे रीजन ले लो, जैसे कतार हो गया, बहरीन हो गया, हाँ, इन सारे रीजन्स में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज अभी ओपन है, एंड देन पीपल कैन ऑलवेज लुक टू pursue their career in these countries. Challenges ये है कि like if I talk about challenges is like optometrists are available from all across the world. तो अभी जो वर्ल्ड की स्टेज है
आप लोगों को पता होगा, लाइक इफ यू आर फॉलोइंग न्यूज एंड स्टफ, फॉर द काइंड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रहा है पूरी दुनिया में, according to that, we have influx of optometrists coming in from different part of the world. So we have optometrists जो UK से join कर रहे हैं, US से join कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से join कर रहे हैं, and we have from everywhere. तो एक चैलेंज तो ये है कि अगर इंडिया से हम यहाँ पे परस्यू कर रहे हैं, then we have to really up our game. और जब हमें अप करना है तो दो चीजों पे करना है. इट इज नॉट जस्ट द क्वालिटी ऑफ ऑप्टोमेट्री जो हम ऑप्टोमेट्री सर्विस जो हम देने वाले हैं, नॉट ओनली दैट, बट ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन या फिर द वे वी एक्चुअली हैंडल अवर पेशेंट्स और कस्टमर. तो ये एक चैलेंज है. और एक चैलेंज यहाँ पे पर्टिकुलरली इस रीजन में ये है कि देयर इज डेफिनेटली डिफरेंस इन पैकेजेस. लाइक जैसे सैलरी की बात कर लें हम लोग, तो डिफरेंट सैलरीज मिलती है डिफरेंट नेशनैलिटीज को. अगेन इट डिपेंड्स ऑन, मतलब यहाँ पे क्लियर डिफाइंड कोर्सेज है, कोर्सेज की गाइडलाइंस है. तो जैसे जैसे ऑप्टोमेट्री इंडिया में हम अगर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से करते हैं, तो बेस्ड ऑन हमें कैसे एक्सपोजर मिलता है उस पे हमें इंडिया में भी सेगमेंट किया जाता है. वैसे ही यहाँ पे segmentation is different for any national who is doing optometry from US. Basically US से ऐसे कोई optometry यहाँ प्रैक्टिस करता नहीं, लेकिन यूके के optometrists बहुत सारे हैं. तो यूके में अगर optometry किया है तो आपको डिफरेंट पैकेज है, फिलीपीन से किया है तो डिफरेंट पैकेज है, इंडिया से किया है तो डिफरेंट पैकेज है. सो दिस इज वन पार्ट ऑफ इट. सो दिस इज ओवरऑल मिडिल ईस्ट में कैसे ऑप्टोमेट्री का पूरा बेस है. नाउ गोइंग अहेड, आई वांट टू गिव सम important tips and on हमें कौन से लाइसेंस करने चाहिए, कौन से रीजन के लिए क्या लाइसेंस है, लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं. सो ऑन द सेकंड पार्ट विच इज लाइसेंस, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक सिंपल टेबल दिया हुआ है एंड मैंने इसे तीन चीजों में डिवाइड किया है. एक वन इज रीजन, कि कौन से रीजन में किस टाइप ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस का नाम क्या है. ओके. एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको ये बताएगा कि क्या आप इस लाइसेंस को इजीली पास कर सकते हो या आपको रियली बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी. Now when I say whether you have to put real effort or it is going to be easy, uh, अगर मान के चलो, if I say that a particular license examination is easy, that means आपकी जो practice knowledge है, अगर उसी नॉलेज से आप एग्जाम अटेंड कर रहे हो, यू विल बी इन अ पोजीशन टू क्रैक दैट एग्जाम. व्हेन आई से मीडियम, दैट मींस यू नीड सम प्रिपरेशन टू क्रैक दैट एग्जाम. एंड जब यहाँ पे हार्ड लिखा हुआ है, इट मींस दैट इन एग्जाम उसके लिए आपको प्रिपरेशन डेफिनेटली करना है. ओके. सो नाउ व्हेन आई से यूएई, पर्टिकुलरली यूएई में आप जो देख रहे हो यहाँ पे, दुबई, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज डीएचए, दुबई हेल्थ अथॉरिटी. शारजा में आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है एंड अबू धाबी में आपको हार्ड लाइसेंसिंग है, हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी. वैसे ही सारे जो भी एब्रिविएशंस हैं, सभी डिफरेंट रीजन के लिए आपको डिफरेंट लाइसेंस है. आपको अगर ये इस पर्टिकुलर स्लाइड की पिक लेनी है फॉर योर रेफरेंस, यू कैन ऑलवेज टेक दैट. आपको गूगल में सिर्फ इसके नाम डालने हैं एंड देन यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन कि इस लाइसेंस अपीयर करने के लिए व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रिपरेशन दैट यू रिक्वायर. प्रोमेट्रिक एग्जाम्स इन सारे लाइसेंस के लिए अवेलेबल है. वन गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस इज मेजॉरिटी ऑफ द लाइसेंस जो आप यहाँ पे देख रहे हो, लाइसेंस एग्जाम, ये आप इंडिया से ही अटेंड कर सकते हो. मेजॉरिटी ऑफ देम इंडिया में ही आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो. ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू हैंडी इन इंडिया. सो वहां से आप ये सारी चीजें कर सकते हो. बट इट्स इम्पोर्टेंट दैट अगर आप ऑलरेडी अपने ऑप्टोमेट्री कॉलेज में अच्छे स्टूडेंट रह चुके हो, इफ यू आर रियली अ ब्राइट स्टूडेंट, then you need not really think too much about this license, you will be able to crack it. लेकिन अगर आप मेरी तरह एवरेज स्टूडेंट हो या फिर अगर आप थोड़े वीक हो ऑप्टोमेट्री में, then you will really have to up your game, you will have to prepare yourself for the examination and then apply for it. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास लाइसेंस हो. अगर लाइसेंस है तभी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो. और आपका लाइसेंस, अगर आप, मैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करने वाला हूँ. सो if you get any of these opportunity, then your license will be mapped to that organization. ठीक है, तो वो एक चीज है जो यहाँ पे होती है. And it is important for you to, if you have to practice as a clinician, या फिर अगर आप कोई भी कस्टमर को या पेशेंट को देखने वाले हो, आई टेस्ट करने वाले हो, then you need a license. उसके बिना आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते. So this is something which you have to keep in mind if you are looking for the prospective product. Now just going forward,
हो सकता है कि प्रीवियस जो 2 चीजें मैंने डिस्कस की उस पे आपको you may have some questions. Please feel free, make a note of your questions, and at the end we are going to discuss and have the open session. Third point जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, like, the important one is, like, what are the opportunities that we have. And basically, अगर if I have to talk in terms of overall opportunities, then it doesn't differ from what we have in India. Basically, इंडिया में हमें जो opportunities मिलती हैं, similar लाइन पे यहाँ पे भी opportunities है, similar profile यहाँ पे भी open है. I also have something as an additional slide which gives you an understanding of key players in this region. क्योंकि ऐसे होता है कि अगर हम इंडिया में हैं तो हमें पता चलता है कि लाइक ओके ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन है. मान के चलो अगर हमें इंडिया में मेडिकल में बात करनी है, सो यू से लाइक शंकर नेत्रालया हो गया, एडी प्रसाद हो गया, या फिर एम्स हो गया, तो ये सारे प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें पता होते हैं. सो सिमिलरली यहाँ पे कुछ की प्लेयर्स है who are majorly in the market and who are major job providers. So if you are actually looking at sorry. So if you're looking at looking at your career with any of these players, it is going to be really helpful. Let me just share. यहाँ पे in terms of opportunities, जैसे it is there back in India, you have like optometrists who can actually practice. They can work in small clinics. There are clinics. There are hospitals which are tertiary hospitals. Then there are independent retailers. Okay, and जब मैं clinical practice की बात कर रहा हूँ, there are clinical practice along with specialty. Like कुछ optoms यहाँ पे हैं जो clinical practice के साथ BV microvision भी करते हैं. Clinical practice के साथ they also do their specialty contact lens, right? Independent retailers बहुत सारे हैं, opticians जो they work here and they always need an optometrist. Optician independent retail अगर अशोक क्लिनिक के साथ है तो it is mandatory that they should have a licensed optometrist with them, and इसीलिए license लेना बहुत important रहता है. So there are two ways of practice. If अगर independent retail का if you look at independent retail, then independent retail can be just an optical outlet without a clinic or an optical outlet with clinic. But it is mandatory if the optical outlet is with clinic, then you need to have a licensed optometrist available with you. Yeah, an optometrist who has a license who wants to start an independent practice can actually apply for both optical and clinic together. Optometrist in corporate retail, वो एक opportunity है. Then you have professional consultants. ये जो consultants है, these are like B2B consultants wherein they do the product consultancy. So optical, be it optical lens or contact lens, so that's one opportunity open. And then you have professional consultant and trainers for the corporate. So if you look at my profile, then I am a training manager for Rivoli Vision. तो वो एक corporate level में है जो you can actually seek for, right? And then area optometrists होते हैं who are responsible for overall knowledge development, clinical well-being, and also the business aspect of optical lens in a corporate retail chain. And then few of optometrists, like if they are really ambitious about numbers and business as such, then they become business and area managers as well. So ये सारे opportunities है which is available handy for all of you. Going forward, we have these are the key players. So I have just segregated them into three components. One is like hospitals, so basically tertiary hospitals like Moorfield, Cleveland, East Astor, Burgee, Huron Salud. These hospitals are having a good eye care network, and many optometrists from India are part of these organizations. And then when we talk about corporate optical retail, we have Yatim, Al-Jabr, Maghrabi, Rivoli Vision. These are premium luxury retailer. And then we have Astral, Grand Optics, and then there are a lot of other small time retailers who are available. And they also have a good practice out here. And then you have other corporates, like generally when we say corporates from the optical lens perspective, and these are the major ones which exist here, Essilor, Zeiss, Sigma. And then we also have Vision RX as a part of corporate here. And then in contact lens, you have Acuvue, Johnson Johnson, Alcon, Bosch, and Oppo Vision. So these are the key players in the market as such. Now I just wanted to focus or give you some heads up on what is important skill set
and concepts that an optometrist should be aware when you are thinking of applying abroad. Okay, and this particular piece is very important because I have one of my colleague who is from UK, and he was actually highlighting that why optometrists from India are really finding struggle to be getting along with the practice which is in Middle East. It has nothing to do with the subject knowledge. It is mainly to do with the skill sets and the concepts that you should be aware of. So these are the major one. Okay, one is refraction. Now, अगर आप यहाँ पे refraction का word देख रहे हो तो don't take me wrong. I'm not saying that refraction हमें पता नहीं है, लेकिन refraction का gold standard है, steps है जो हमें follow करने हैं, and that is a standard procedure for refraction. जैसे आपने स्फेरिकल रिफाइन किया, सिलेंडर एक्सिस हुआ, सिलेंडर में पावर हुआ, डियोफ्रम हुआ, एंड देन लेफ्ट आई का किया ना, आपने बाइनोकुलर बैलेंस किया, तो ये एक स्टैंडर्ड है विच इज फॉलोड हियर. तो हमें अगर ये बहुत अच्छे से पता है, then the customer is also used to these standards and it will be easy for you getting gel with what is the existing practice. Just excuse me. Sorry for that. So it will be easy for us to get gel with what is the existing practice. Second है usage of phoropter. I understand कि हमें basically the exposure with phoropter is very limited in India, but then it's like we need to take up efforts. फ्रेंड के यहाँ पे, कलीग के यहाँ पे, कॉर्पोरेट में कोई फ्रेंड्स है जो काम कर रहे हैं जिसे फोरऑप्टर का एक्सेस है, we should be at least aware of how the foropter functions. If you can do it practically, very good, because एक बार once the practical session is done, it becomes easier for you to get gel on. As I said, I'm a training manager here. I run sessions for people who come from India, and trust me, people are working in premium retailers. अच्छे अच्छे रिटेलर्स में इंडिया में काम कर रहे हैं, बट व्हेन दे कम हियर, उनको वो फोरऑप्टर कैसे चलाना है वो थोड़ी दिक्कत होती है. तो आइडियली अगर उन्हें थोड़ा इन एंड आउट पता होता है, देन इट बिकम्स इजियर, एंड दिस इज वेयर द चैलेंजेस. एंड कहीं कहीं पे यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हैव यू यूज्ड फोरऑप्टर और आर यू अवेयर ऑफ हाउ फोरऑप्टर वर्क्स. एंड इस क्वेश्चन पे भी बहुत सारे रिजेक्शंस होते हैं बिकॉज ऑप्टॉम्स ने कभी फोरऑप्टर देखा ही नहीं. सो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ इट. द थर्ड थिंग इज हैंडलिंग स्लिट लैम्प, बिकॉज जैसे अनलाइक बैक इन इंडिया जहाँ पे रिफ्रैक्शन एंड पावर निकालना एक स्टेज है, we are here more concerned about the eye health and also referring customers who are coming to the clinic. तो minimum slit lamp handling आना चाहिए. Slit lamp अगर है तो better है. If not, then at least having a knowledge about slit lamp definitely makes a lot of sense. एक्सपर्टीज विद लेंसोमीटर. लेंसोमीटर जस्ट पावर निकालना नहीं, लेकिन और सारी क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे पीडी हो गई, फिटिंग हाइट हो गया, यूवी लेवल चेक करना हो गया, टॉलरेंसेस चेक करने के लिए लेंसोमीटर की डिफरेंट सेटिंग्स हो गई. ये सारी चीजें हैंडी होनी चाहिए बिकॉज दैट मेक्स यू मोर एम्प्लॉयबल. एंसिलरी टेस्ट विद फोरऑप्टर, अभी जैसे एनपीए हो गया, एनपीसी हो गया, फोर ईयर टेस्ट हो गया. हाउ डू यू डू दिस विद फोरऑप्टर? इफ यू हैव दीज, इट इज बेटर. And then other examinations like non-contact tonometer हो गया, fundus photography हो गया. Having idea about all this, because the clinics here or the corporate optical retail chain actually provide you access to all these equipments. And if you have knowledge about it, then it's an opportunity for you to practice on this and grow. Yeah. Talking on the other skill set that we should be focusing on, which is not completely technical, but from the aspect of soft skill and communication. This is ये एक ऐसा एरिया है जो एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट we don't focus much, and knowledge gain करने में हम इतने we become so focused कि ठीक है, knowledge पहले gain करते हैं and then ये soft skill and communication slowly develop कर लेंगे. But the major thing here is कि सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन अगर हमारा अच्छा नहीं है, then it becomes really difficult to strive in international market. International market में अगर आप देखोगे, if we are challenging or if we are actually competing with optometrists from even like Africa or optometrists from UK, उनकी primary जो English level होती है is completely a different
different stage. So basically, when we are actually looking at getting into the overseas market, हमें communication पे काम करना है, and majorly like if we are at least at an average level of English, it becomes good. So कहीं पे अगर हमने कहीं पे English में conversation ज़्यादा नहीं की है, then I would always suggest all of you to be like just upskilling yourself with the language, because that is going to help you. यहाँ पे मैंने कुछ points डाले हुए हैं which is like important in terms of upskilling. One is like customer engagement. ये interaction level पे हो गया. Interaction level पे like जरूरी नहीं है कि as an optometrist always अगर आप clinical setup में हो, it becomes easier for you to have that one-on-one clinical conversation with customer या फिर patient. अभी patient को अगर आपको कुछ बताना है, you can do it at any level, right? You can do it at say non-emotional level, मतलब जहाँ पे आप कोई emotionally नहीं दिखाते हो, सिर्फ जो भी फाइंडिंग्स है आप वो बताते हो एंड यू आर क्लोजिंग इट, और यू कैन डू इट इमोशनली. बट यहाँ पे बेसिकली द इंटरनेशनल मार्केट दे एक्सपेक्ट यू टू एंगेज कस्टमर, expect you to explain everything to the customer, expect you to be emotionally thinking about customer, be more empathetic. तो ये सारी चीजें हैं जो they would actually want you to develop. Now the idea is अगर हम यहाँ पे परस्यू कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे आना चाहते हैं, या फिर anywhere in the international market if you want to go, then these are the skills that you should be possessing. Customer engagement, English language का level हमें थोड़ा सुधारना है. Retail readiness. अभी retail readiness is like why I have put that word retail readiness is because retail sector is one which gives maximum job. या फिर अगर आप अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी शुरू करते हो तो देयर इज ऑलवेज अ बिजनेस एस्पेक्ट अटैच्ड टू इट. तो रिटेल रेडीनेस होनी चाहिए जहाँ पे हाउ डू यू एक्चुअली ब्रिंग आउट द फीचर एडवांटेज एंड बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, या फिर ऑफ योर आई टेस्ट. बेसिकली क्लिनिक में अगर आप कुछ ऑफर कर रहे हो तो हाउ डू यू ब्रिंग आउट ऑल दोस इंपॉर्टेंट एलिमेंट. ओके, good and good on analytical thinking. Analytical thinking is nothing but how do you strategize, how do you actually select from the lot of products that is available for you to dispense and stuff. Assertive with recommendations. Recommendations बहुत important है. आप क्या recommend करते हो as a solution, आप क्या recommend करते हो as a further test, how you are assertive with your findings, ये बहुत important है. And then team player, मतलब team work होना चाहिए. ऐसा नहीं है like sometimes बहुत जगह पे ये भी होता है कि if you have a very good knowledge, then हम टीम वर्क में फोकस नहीं करते हैं, और कहीं कहीं पे टीम वर्क बहुत ज्यादा होता है लेकिन नॉलेज पे फोकस नहीं होता है. सो देयर शुड बी अ बैलेंस. सो वी शुड एम एट बिकमिंग अ टीम प्लेयर. तो दिस इज these are the areas that is actually sought after. एंड जब भी अगर आप यहाँ पे कहीं पे एप्लीकेशन या फिर जॉब ट्राई करते हो, डेफिनेटली recommendations बहुत काम करती हैं, but at the same time if you are able to actually show that you are good at all of these, then your chance of getting recruited becomes much higher. और यहाँ पे प्रैक्टिस ये भी होता है कि इनिशियली व्हेन यू डू अ राउंड विद एचआर मैनेजर्स, अगर आपसे कोई राउंड करते हैं तो दे एक्सपेक्ट यू टू बी लाइक नीटली ग्रूम्ड. ग्रूमिंग अच्छी ड्रेसिंग होनी चाहिए. when you talk confidence होना चाहिए. and if you can mix up your language, like अगर आप HR से बात करते हो and HR को हिंदी पता है या फिर कोई लोकल लैंग्वेज पता है, अगर आप लोकल लैंग्वेज में अपनी सारी चीजों को एक्सप्लेन करोगे, इंग्लिश को बीच में नहीं लाओगे, so that can be hindrance. So it's always better for you to work on all these areas. So with that, I'm just bringing this whole thing to a closure. I'm open to questions that you may have. 5 पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं आप लोगों के लिए, स्लाइड्स में यहाँ पे रखता हूँ. एंड देन इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग बियॉन्ड दिस एज वेल, आई विल बी हैप्पी टू आंसर. आई एम जस्ट हैंडिंग इट ओवर टू द मॉडरेटर जस्ट इन केस इफ यू वांट टू मॉडरेट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. Thank you so much, sir. Such a very beautiful and informative session we have. So, is anyone have any questions? Salary क्या रहता है? Sir, I got one question in. No problem. See, you can be open. It's okay. मतलब हमने ऐसा नहीं है कि आपको प्रोफेशनली ही मेरे साथ मेंटेन करना. You can pitch in any questions that you have. Obviously, there was a question which is salary क्या रहता है. अगर मुझे बताना है तो
दिस इज बिटवीन 4.5K to 7.5K, मतलब 4,500 से 7,500। एंड अगर आप इसमें लाइक इसे आप 20 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 80,000 से 1,40,000 इंडिया के होते हैं। बट अगेन अगर आप यहाँ पे रहोगे तो यहाँ के एक्सपेंसेस वगैरह आप देखोगे तो लाइक मे बी जो भी आप ले रहे हो उसका हाफ आप बचा पाओगे, बाकी हाफ आपका यहाँ पे एक्सपेंसेस में निकल जाएगा। Great, sir. Sir, I have one question from WhatsApp group. So the one optometrist asking, there is a difference between the matric exam paper for the pay for education department for hospital and corporate, or there is a similar pattern for each and every optometrist? ओके, ये जो लाइसेंस एग्जाम है इट इज एक्चुअली ऑटो मोड में है, इट इज ऑनलाइन एंड फॉर एवरी ऑप्टोमेट्रिस्ट इट इज डिफरेंट। ओके, सेकेंड थिंग, लाइसेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको देयर आर सम कोर्सेज गिवन। आई बी वेरी ऑनेस्ट हियर, इंडिया में बहुत सारे ऐसे आई थिंक कोर्सेज है या फिर इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे DHA लाइसेंस, MOS लाइसेंस, हार्ड लाइसेंस, इन सब की ट्रेनिंग होती है। नाउ इनके पास जो क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चंस समहाउ इन्होंने 15-20 साल के पहले के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो अभी एप्लीकेबल नहीं है। अभी DHA का पूरा स्ट्रक्चर बदल चुका है एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली DHA पे कुछ काम हो रहा है हमारे एंड से भी टू एक्चुअली सपोर्ट कैंडिडेट्स हु वांट्स टू जॉइन आवर ऑर्गेनाइजेशन, एंड हम उसका डेटा बैंक वगैरह इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इस पे थोड़ा क्लैरिटी मिलते ही आई विल बी जस्ट गिविंग यू सम अपडेट्स। लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप अगर मतलब और एक क्वेश्चन आ रहा है प्रद्युम्न विश्वकर्मा से अबाउट स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, तो ये जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच DHA का है, ऑल यू हैव टू डू इज, पहले तो आपको DHA साइट पे जाना है, वहां पे इट विल गिव यू ऑल दी इंफॉर्मेशन। प्रोमेट्रिक एग्जाम होता है, यहाँ पे 2-3 चीज है। एक है आपकी एलिजिबिलिटी, लाइक से फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज में डिप्लोमा एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लाइक जहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है वहां पे बेसिक आपको BSc कंप्लीट करनी है 4 साल की। और ये जो BSc या बी ऑप्टोमेट्री जो 4 साल की आप कंप्लीट करते हो और रेगुलर मोड में होना चाहिए। डिस्टेंस एजुकेशन मोड में अगर है तो फिर आपकी यूनिवर्सिटी को बताना है कि डिस्टेंस एजुकेशन में जो भी डिस्टेंस लर्निंग सेंटर था उसमें सारे ऑप्टोमेट्री फैसिलिटी अवेलेबल थे इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप। तो ये अगर आएगा तो आपको एलिजिबिलिटी क्लैरिटी मिलती है। एलिजिबिलिटी क्लैरिटी अलग है और आपका DHA लाइसेंस अलग है, एग्जामिनेशन अलग है। आपको एलिजिबिलिटी और DHA दोनों क्लियर करना है तभी आपको फाइनल लाइसेंस मिलता है। दिस इज एज पर DHA, ठीक है। जब आपको फाइनल लाइसेंस मिल जाए उसके बाद ही आप काम कर सकोगे कोई क्लिनिक में। और ये जो लाइसेंस होता है ये आपका लाइसेंस इज गेटिंग अटैच्ड टू द प्रैक्टिस। मान लो अगर आपने मेरे साथ काम किया, मेरा ऑप्टिकल का नाम है मुर्तुजा ऑप्टिकल, जब आपका लाइसेंस आ गया और मैं अगर आपको ऑप्टोमेट्रिस्ट की तरह अपने इसमें ले रहा हूँ तो आई विल मैप योर लाइसेंस और आप मेरे ऑप्टिकल शॉप के मेडिकल डायरेक्टर बन जाओगे। तो यहाँ पे मेडिकल डायरेक्टर करके बोला जाता है, जो भी मेडिकल डायरेक्टर है उस शॉप का उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है अगर कोई भी क्लिनिकल प्रैक्टिस या क्लिनिकल सर्विस अगर वो ऑफर कर रहे हैं तो। सो दैट्स हाउ द होल थिंग वर्क्स। We have one more question, sir. Yeah. One optometrist having a diploma in optometry and having a 2-year experience, can he eligible? Can he apply for optometry job in hospital, corporate, or retail? ओके, एज आई सेड अभी के लिए लाइक UAE स्पेसिफिक अगर मुझे बताना है तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। मिडिल ईस्ट में कुछ कुछ जगह है जहाँ पे डिप्लोमा एक्सेप्ट होता है बेस्ड ऑन डिप्लोमा एंड वर्क एक्सपीरियंस, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस लोकल होना चाहिए। लोकल इन द सेंस अगर आप सऊदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डिप्लोमा चलता है एंड सऊदी की एक्सपीरियंस चाहिए 2 या 3 साल की। लेकिन अगर आप इंडिया से डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज योर बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स डिग्री के बिना आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, वो एलिजिबिलिटी में नहीं गिना जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके पास बैचलर डिग्री भी है
तो आपके पास 2 साल रिटेल एक्सपीरियंस होना चाहिए इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ रिटेल सेगमेंट, या फिर 2 साल हॉस्पिटल एक्सपीरियंस होना चाहिए इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द हॉस्पिटल सेगमेंट। तो कहीं पे भी अगर आप काम कर रहे हो, यू हैव टू आफ्टर फिनिशिंग योर बैचलर्स आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है। We have one more questions. When optometrist having a BV binocular vision assessment specialty and vision therapy specialty, so फेलोशिप एडिशनल बेनिफिट कोई वहाँ पे जॉब में कोई एडिशनल बेनिफिट उसका मिलता है क्या? वो स्पेशलिटी के साथ उसमें अप्लाई कर सकते हैं दुबई के लिए और अदर गल्फ कंट्री के लिए? ओके, तो यहाँ पे बाइनोकुलर विजन एंड विजन थेरेपी बेसिकली स्पेशलिटी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, कॉन्टैक्ट लेंस के लिए अलग चीज है जहाँ पे इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर उनको सर्टिफिकेशन मिला है, लाइक क्लियर कॉन्टैक्ट लेंस एंड ऑल। लेकिन बाइनोकुलर विजन और विजन थेरेपी ऑर्थोप्टिक्स में जाता है, और ऑर्थोप्टिस्ट करके एक स्पेशलिटी है यूके में जो यहाँ पे जॉब के लिए आते हैं। तो अगर ऑप्टोमेट्री जॉब आपको हॉस्पिटल में मिलता भी है, आप बहुत बेसिक लेवल की ऑर्थोप्टिक या विजन थेरेपी करते हो, मेजॉरिटी जो ऑर्थोप्टिस्ट होते हैं यूके के, उनको ही ये सारे बाइनोकुलर विजन के प्रॉब्लम जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो प्रैक्टिस है बाइनोकुलर विजन और विजन थेरेपी इंडिपेंडेंटली पूरा इज नॉट अंडर ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं उसे, उनके खुद के क्लिनिक में कर सकते हैं, लेकिन अगेन रेफरल जो भी हायर करना है उनको रेफरल हॉस्पिटल को ही करना है, और हॉस्पिटल में ऑर्थोप्टिस्ट उसे देखते हैं। तो आपको लाइक यू नो आप बैचलर्स डिग्री रखिए एज अ बीबी स्पेशलिस्ट यहाँ पे सिर्फ बाइनोकुलर विजन के लिए नहीं आ सकते। One more question, sir. How to apply for DHA or traumatic exam, and how to apply for particular company or particular retail outlet? बेसिकली यहाँ पे टू अप्लाई फॉर एन एग्जाम DHA, तो आपको पहली फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक यू नो डोंट रन बिहाइंड एनी एजेंसीज या एनी कंपनीज हु एक्चुअली प्रॉमिस यू टू गिव गाइडेंस। सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस, सारे स्टेप बाय स्टेप मेथड्स, स्टेप्स, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको सिर्फ जैसे मैंने बताया, मैंने एक स्लाइड भी दिखाई थी, DHA दुबई हेल्थ अथॉरिटी, आप DHA डालोगे तो आप उसमें आपको पता चलेगा दुबई हेल्थ अथॉरिटी, दुबई हेल्थ अथॉरिटी के लिए लाइसेंस, ऑप्टोमेट्री लाइसेंस के लिए मुझे क्या एग्जाम ये करनी है। जस्ट आस्क दिस इन गूगल, स्टेप बाय स्टेप आपको सब मिल रहा है, आपको सिर्फ उसे फॉलो करना है। जैसे मैंने बताया DHA के लिए ये जो एग्जाम प्रोसेस है, एग्जाम प्रोसेस विल ओनली बी चेकिंग योर नॉलेज, ठीक है, तो वो एक पार्ट हो गया। एलिजिबिलिटी अलग होता है। एलिजिबिलिटी इज लाइक आपने जो सर्टिफिकेशन की है, एलिजिबिलिटी पीछे से चेक होता है कि क्या कि आपकी यूनिवर्सिटी सही है, आपकी सर्टिफिकेट सही है, क्या उन सर्टिफिकेट को वो लोग एक्सेस करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी से एक बार रेफरेंस चेक होता है, वो अगर हो जाए तो एलिजिबिलिटी चेक एंड आपके एग्जाम का रिजल्ट दोनों क्लियर होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्लियर है, एग्जाम क्लियर नहीं है, नो लाइसेंस। एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं है, एग्जाम क्लियर है, नो लाइसेंस। ठीक है, तो आपको ये दोनों क्लियर करवाने हैं, और दोनों अलग अलग प्रोसेस है। कैसे दोनों को करवाना है आपको पूरा रेफरेंस वेबसाइट में मिल जाएगा, एंड दिस इज सेम इवन फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन। अभी यहाँ पे और एक कैच ये है कि जब आपको whenever you know there is a opportunity coming up and कोई HR आपको अप्रोच करता है, sometimes company will actually support you in closing this particular thing which is eligibility and even the license examination. अगर कंपनी को जल्दी है, they want you to be joining the job, then once you come and join the job here, आपके रोल में ड्यूरिंग योर प्रोसेस कंपनी बैकएंड से ये सारी चीजें आपके लिए प्रोसेस करवा भी सकता है। सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज लाइक आप ये चीज बैकएंड से इंडिया से ही रेडी करके जॉब अप्लाई कर सकते हो, विच इज इजी फॉर HR टू ऑपरेट बिकॉज उनको रेडीमेड कैंडिडेट मिल रहा है जो क्लिनिक पे डायरेक्टली जाके काम कर सके। या फिर यू कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर द वैकेंसी, HR आपसे ये करेंगे एंड देन आपको वो बताएंगे कि कंपनी आपको कहाँ तक सपोर्ट कर सकता है। लेकिन सेकेंड प्रोसेस इज लाइक HR हमेशा थोड़े लाइक यू नो दे कीप थिंग्स ऑन अ डे, लेकिन पहला प्रोसेस जहाँ पे आपने लाइसेंस किया हुआ है उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। Sir, one more questions. What is the opportunity for PhD scholar or PhD holder in Middle Okay. East?
Exactly. Here, यहाँ पे, like, if we talk about PhD scholars as such, in terms of opportunity, the only playing field is tertiary hospitals. जैसे क्लीवलैंड हो गया, मूरफील्ड हो गया, वहाँ पे आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलती है, which is even bounded within the area. लेकिन अगर बिगर पिक्चर देखना चाहे तो उनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूके में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है, देयर यू गेट अ बेटर चांस. पीएचडी अगर आप हो स्कॉलर, you will have to seek in a particular area. Now, the other responsibility or other opportunities that PhD can seek for is in academics. But जैसे मैंने बताया, यहाँ पे academics बहुत सारे minimum institution नहीं है. There are only limited institution which actually offer optometry as a course. तो अगर आप PhD भी कर रहे हो, and if the PhD has a further sub focus in terms of other medical department, then यहाँ पे opportunities आप seek कर सकते हो. If it is going to be pro in terms of optics या optometry, then यहाँ पे particularly in UAE, the opportunities are very, very limited. So one more question. Some optometrists wants to your recommendations in India. Which institution providing optometric training or optometric training or optometric material? Prometric trainings, prometric examinations. Prometric is a system wherein examination and आप trial tests वगैरह कर सकते हो, ठीक है. When we talk about institution, there's there is an institution in Kerala which actually train you for DHA. In fact, like, in fact, if you want, what I can do is आप लोगों के सामने मैं I can just do this quick check for you. Let me do this. Hold on. And I'm just, मतलब मैं सिर्फ एक रेगुलर सर्च कर रहा हूँ. मुझे जनरली ये करने की जरूरत नहीं है. DH एग्जाम प्रैक्टिस डाल रहा हूँ, and you can see, like, you have online DH Optometry एग्जाम क्वेश्चन बैंक है, प्रिपरेशन बोर्ड है. ओके. एंड ये जो DH है उसमें नर्सिंग के ज्यादा मिलेंगे. ऑप्टोमेट्री स्पेसिफिक यू विल हैव टू डू योर ओन सर्चेस. लाइक अभी if you are going specific to optometry practice, ठीक है, you will get your optometric questions. और ये एग्जाम एज, all these are, institution which actually run them. लेकिन again, if you want to go if you want to go with my recommendation, what I would suggest is जो भी इंस्टीट्यूशन ये ऑफर कर रहे हैं, दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि डीएचए के क्वेश्चंस कैसे आएंगे या फिर एमओएच के क्वेश्चंस कैसे आएंगे. 4 क्वेश्चंस है तो कंफ्यूजन कौन से लेवल का होगा, एंड हाउ डू यू क्लियर दैट कंफ्यूजन, एंड व्हाट डू दे मीन बाय दैट क्वेश्चन. लेकिन वॉट एवर द ट्रेन, एंड जो सैम्पल एग्जाम्स के क्वेश्चंस मैंने भी यहाँ पे डाउनलोड किए थे, यू डोंट गेट एनी क्वेश्चन फ्रॉम दैट. तो ये जो क्वेश्चन पेपर है अभी के लिए रिसेंटली फॉर डीएचए, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि पीपल आर अपियरिंग फॉर डीएचए, recent question paper has changed. तो जो भी कोचिंग या जो भी प्रैक्टिकल टेस्ट हो रहे हैं, that is not applicable. तो अभी what can be an alternative? Alternative is, like, you will have to start referring to question banks, and बहुत सारे textbook references हैं which I can share later on with the Ikra. Links I can share and she can put it on the group, जहाँ पे you get this young question and answer in optometry. और उसमें you get about 500,000 10,000 questions on each subject. मतलब part by part of the eye, optics के ऊपर, सारे subjects के ऊपर there are multiple choice question with the understanding of what is the right answer. तो अगर आप वो reference और वो preparation करोगे तो it will be easier for you to crack DHA. Thank you. So one more question. So some optometrist wants to join Rivoli. So they are asking for criteria. What is the Rivoli's criteria to join? देखो, it is like the area that I have discussed, right? I have shown some important aspects that needs to be covered during the whole thing. So
criteria even for Rivoli is like you need to have a certain background knowledge. Um, I'll tell you one more challenge which we face when people apply from particularly from हमारे country से. So basically हमें उन पे बेसिक ऑप्टोमेट्री लेवल पे काम करना पड़ता है जहाँ पे वी नीड टू teach them again or re-emphasize on certain test. The kind of volume that we get in India, easy होता है कि कुछ कोई ना कोई steps हम मिस कर जाए या फिर कुछ सब्जेक्ट नॉलेज बेस हमारे पास नहीं है. तो रिवोली में हमने बेसिकली ये रखा हुआ है कि वी चेक कैंडिडेट फ्रॉम टू एस्पेक्ट. और जो स्लाइड 4 और 5 पे हमने जो मैंने दिखाया आपको, the fourth one is basically mainly on whether you are ready for the market. मतलब आपको फोर ऑप्टर्स पता है, बेसिक टेस्ट पता है, रिफ्रैक्शन के स्टैंडर्ड्स पता है, तो ये सारी चीजों पे इवैल्यूएशन होता है, राइट. एंड देन द फिफ्थ वन, जो फिफ्थ स्लाइड थी, दैट वाज ओनली कस्टमर एंगेजमेंट एंड स्किल. के आप एक पर्टिकुलर पेशेंट या कस्टमर को देखते हो तो हाउ डू यू कन्वर्स, आप क्या 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 पूछते हो, कैसे उससे डिटेल्स निकालते हो, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पेशेंट से या कस्टमर से मिल रही है उसके बेसिस पे आप व्हाट इज योर फाइनल रिकमेंडेशन, व्हाट यू वांट टू डिराइव, व्हाट यू वांट टू अराइव. तो इन सारी चीजों पे बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने बताया, द अदर नेसेसरी थिंग वुड बी योर बैचलर डिग्री followed by 2 years of retail experience, specific if you want to join in organization or corporate which is an optical chain. तो रिवोली के लिए ये सारी चीजें. मुझे बहुत सारे रिज्यूम्स मिलते हैं जिनके पास मेरा कॉमन कनेक्ट है, लेकिन अगेन ये सारे रिज्यूम एचआर को जाते हैं और एचआर डज अ क्लियर कट फर्स्ट स्टेप चेक एंड उसके बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ता है. Sir, we have one more question. How to apply in academics? Okay, academics basically जैसे मैंने बताया, again like I'm just getting this question again. Academics अगर आपको इंडिया में अप्लाई करना है तो you have associations, ASCO के association है, you have some prominent personalities who can actually give you heads up on that. यहाँ पे we don't have any academic institution as such. यहाँ पे एक association है which we say UAE Indian Optometric Association. एंड ये एसोसिएशन में यहाँ पे इंडियन ऑप्टोमेट्रिस्ट के ग्रुप है एंड सारे के सारे ऑप्टोमेट्रिस्ट यहाँ पे दे आर एसोसिएटेड विद कॉर्पोरेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस. दे आर नॉट एसोसिएटेड विद यूनिवर्सिटीज. सिंपल रीजन भी कि यूनिवर्सिटी में ऑप्टोमेट्री कोर्सेज नहीं है यूएई. ओके. Okay, thank you so much, sir. Such a very beautiful and very informative session we have. Thank you so much. So today we have completed five years completed for Optometry Learning Group. So thank you so much, sir, for coming. And one more questions from one student. Mm-hmm. So it is mandatory. It is mandatory to join the retail experience after pursuing a diploma degree for joining Optometry in Dubai. Yeah, so if it is particularly to Dubai, then it is mandatory that you have a retail experience. Okay, because when you apply for the eligibility criteria and all, they will check for your retail experience. Now, many a time, what happens is you may have 3 years of your full-time journey, and then your internship is in optical. Okay, तो आप ऑप्टिकल का इंटर्नशिप आपके एक्सपीरियंस में दिखा सकते हो. यू कैन ऑलवेज ऐड दैट एज अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस. लाइक इंटर्नशिप आपने 3 महीने की ऑप्टिकल में या 6 महीने की है, तो देन another exposure of 1.5 year would also work. तो उस तरह अगर हम देखने जाए तो 5.5 साल में भी आप यहाँ पे परस्यू कर सकते हो. Yeah, there's one question from Dharmesh. He talks about BSc from lateral entry. BSc lateral entry valid है, provided ये BSc lateral entry आपका जो है, it is lateral entry providing institution should not have a distance mode. उसका regular mode होना चाहिए. Because जब आप lateral entry करते हो तो जो भी gap है in between
your existing diploma and BSc program वो cover हो जाता है इन बीच में, तो that doesn't affect your overall eligibility here. Thank you so much. After a long time, we have such a beautiful session with you. So in future, we are going to plan Optometry Learning Season 5. So we are going to invite you back to back. And most of the optometrists wants to see your face and see your, listen your voice again and again. I'm seeing this chat box. Some of optometrists writing, sir, I want to listen you again. I want to contact with you again. Kindly share your email ID. Can you please give me a number? So this kind of questions I'm having in chat box. So that is basically, what I'll do is like, for all of you, I'm just leaving my email ID. I'm not saying I'm a busy person, but in case if I don't revert back, feel free to, just write on the same email again with whatever questions you have. Again, a request is that, I'll not be in a position to like, if your question is something related to optometry or practice or something, the information that you want on UAE, you are always welcome. Definitely your CVs and something where you want a job in Rivoli. यहाँ पे, as I said, I'll be very honest. I will just I'll do one thing for sure. मैं आपके resumes जो भी है HR को forward कर सकता हूँ. And हमारे यहाँ पे एक strict process है, step by step. Once you clear that process, then you will be in a position to get it. So it's completely on your overall way of how do you approach, how do you respond to those questions, and how do you crack it, right? I'm just putting in my email ID here for all of you to just feel free, just in case if you have any question. Chat में मैंने अभी post किया है. You can always access it. Sir, we have one more question from Usman sir. Yes. So why offer and package going down in UAE? Why offers and packages are going downwards? Okay. Offers and package earlier, how it used to be is, again, don't take my comments in a different term. Lekin the whole influx of optometrists from India basically is huge. Okay. Even in my earlier slide, I have mentioned that there's a different package for different nationality. Now, if we talk about a package for a person joining from South Africa, it starts at 9K. For UK, it starts at 11K. It's that the influx from these countries are very limited. तो उनके packages वहाँ पे ऐसे ही है. But when we say India, यहाँ पे we have influx coming in from all regions, and predominantly UAE में we have a lot of exposure to south area. Typically तो वहाँ से optometry का influx बहुत ज़्यादा है. They know all this process. They already have the DHA license, and we get easy access to hundreds of optometrists who are available in the market searching for job. And that's why then there is a competition within the community, and we get access to optoms who are fighting even for a lesser, who are ready to join even for a lesser thing. So from the corporate culture as such, they would always want to get a good chunk of people, but again pay them less. So that's the reason this bracket, which was earlier for all Indian optometrists, which was between 5 to 9, is now gone downwards between 4 to 7K. That's the major reason for the package to go. It's again, as I said, it has nothing to do with the overall quality. Yeah, we are definitely, like any organization you join in, they have their own training setup wherein we put in efforts to really work on the people and get them to the level that we want. So definitely education part, knowledge part is taken care of, but then the package is something which is also proctored, or say which is also seen by the labor department, and that's how the bracketing and everything happens. Thank you so much, sir, for such a very beautiful answer. I hope it's clear to all. Thank you so much, Usman sir, for raising this question. So we are very honest.
Okay, thank you. So it was Thank you so much, sir. Ikra, to be a part of it, and maybe like I'll definitely I would love to be part of further sessions as well. Let me know if there's anything that I need to cover, and wish optometric learning a successful 5 years and 4 years to come. And yeah, I always love to stay connected with budding optoms and new students. So thanks for giving me this opportunity. Thank you so much, sir. Thank you, sir. We will definitely share you soon the topic list. So we Yeah. are going to plan optometry